A very good morning to all the viewers who are watching my video at present. I am from the team of Mission Iceland with Integrity. So, in this video, we'll be discussing about the in-bands of section. Okay, so let me underline this such that you will be getting an understanding regarding that. In bands of the section 140 124A, a provisional relief. So according to 124A, what is that? What actually this section is? What actually the section usually implement? So when we discuss about the past history, it has been implemented by Lord Macaulay in under British government. Okay, so this law has been formulated by British government under Lord Macaulay. Okay, Lord Macaulay. So then after even MG Gandhi has also opposed this law about how actually the laws has been implemented against, if we go against any such law, what are the different policies which usually comes into control when we usually dissatisfy this law, disallow this law. तो उन सभी के बारे में usually इस वीडियो में डिस्कस किया गया है आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 124. ठीक है, तो जब सस्पेंड किया गया है इस सेक्शन को, अंडर हाउ टू नेगोशिएट दिस इफ द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड डिफरेंट लॉस, डिफरेंट प्रोविजंस, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स under this law, which usually comes under in any case in the court of law. So that's the reason why here it has been discussed. That's the reason why here it has been underlined with a very important crucial topic and protocol, and also you can say that it's a kind of provisional relief to different person who usually comes under this law. ठीक है, तो उन सभी के बारे में इसमें यूजुअली डिस्प्ले किया गया है. उन सभी के बारे में पहले से डिस्कस इधर कर चुके हैं इस एनालिसिस में कि द जस्टिस, ओके, द वी कैन से दैट द यस इधर से लेकर. ठीक है, सो इन प्रोविजन विद क्रिमिनलाइज ऑफ द सेडिशन, इट इज़ बीन यूज्ड टू सक्सेसिव regime including the government's post independence to suppress democratic dissent. Previously, during oral hearing, the bench presided by Chief Justice N.V. Ramana had indicated that it was on the view that the law was an encouragement and colonial era regime. So which I have already said, it's the law which has been given by Thomas Macaulay, but the British era itself. So how actually this law usually governs and affecting this, and how actually all pending trials and proceeding arising court of charge framed under section 140 124. So if we go against any law, any such law, we will be having a notified case, right? So this law can be unified, this law can be revamped, okay, by a eminent कोर्ट ऑफ जस्टिस बाय इमिनेंट कोर्ट ऑफ पर्सन. सो उन्हीं के बारे में यूजुअली इसमें डिस्प्ले किया गया है. ठीक है, तो उसके बाद इसमें ये भी की एस्पेक्ट है बेस्ड ऑन रिकन्सिडरेशन. सो बेस्ड ऑन रिकन्सिडरेशन, इसका मतलब क्या है? बेस्ड ऑन रिकन्सिडरेशन, द डायरेक्शन वॉज इशूड आफ्टर द यूनियन गवर्नमेंट फिल्ड एन एफिडेविट इन्फॉर्मिंग द कोर्ट दैट इट हैज़ डिसाइडेड टू री एग्जामाइन द लॉ. ठीक है, इन सभी को जैसे कि मैं बोला रिवैम्प, तो उसी के बारे में री एग्जामाइन करने के लिए यूजुअली भेजा है. द डिपोजिशन बाय इटसेल्फ ऑफर नो फर्म कमिटमेंट ऑन वेदर द गवर्नमेंट वुड इन फैक्ट recommend to Parliament a complete removal of 124A, but the bench believed that the offer to reconsider the provision, if nothing else, showed that the government was in broad agreement with the court's prima facie. Okay, so here it has been written prima facie. Okay, उसके बाद it is also been noted that it is in tune with the current social minimum and was intended for time to country was under colonial regime, nestled inside a chapter पैनल को डीलिंग विद द ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट. सो इससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको मिल सकता है. व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट? अंडर द रिजिम व्हाट आर द डिप्लोमेटिकल व्यूज़. जैसे कि हम जानते हैं ब्रिटिश एरा में हम सभी लॉज के अगेंस्ट जाते थे, इसी के अंतर्गत या फिर इसी के लिए और उसके लिए ही इस जो कि फॉरवर्डिंग मार्च जो कि करते रहते हैं द ब्रिटिश लॉ के अंतर्गत, इसीलिए इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया या फिर सेक्शन 124A. सो विच यूजुअली रिवैम्प्स
री-एग्जामाइन करने के लिए यूजुअली भेजा गया है, ठीक है। सो अंडर कॉर्नियल रूल इटसेल्फ दे हैव बीन फॉर्मुलेटिंग दिस लॉ, वेदर इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड नाउ और नॉट, इट इज़ अ मैटर ऑफ डिस्कशन। तो इसके अंतर्गत इसमें क्या है यूजुअली, सो इधर दिया गया है, लेट मी सी, सेक्शन 124A डिफाइंस द सेडिशन एज अ लॉ एज एनी एक्शन वेदर बाय वर्ड्स, sign or visible representation which brings an attempt to brings into the hatred or contempt or exits or attempts to exit dissatisfaction towards the government's establishment by law in India. The word dissatisfaction, the provision explains including disloyalty and all feeling of imminent. The section carries with it important of the life in prison, so which is more right from the inspection the offence has been treated as non-bailable. Wow. So because it's on the law which has been formulated by the British colonial government, this means that the person arrested without a trial has no inherent right to bail. So he or she applied to the judge to seek releases. So इसके बारे में ही यूजुअली इसमें चर्चित किया गया है, ठीक है। तो इफ़ वी डिस्कस अबाउट द मुस्लिम अमेंडमेंट इग्नोर, ओके, मुनिस अमेंडमेंट इग्नोर, इसमें यूजुअली द लॉ विच इज़ बीन फॉर्मुलेटेड इन ऑप्शन, द लॉ विच इज़ बीन फॉर्मुलेटेड अगेंस्ट हाउ M.K. Gandhi, Munshi and Bal Gangadhar Tilak has opposed this law, opposed this section, because this law is against what Indians usually view in their viewpoint, ठीक है। तो इंडियंस को कैसे यूजुअली एनालिसिस किया जाता है उस समय, इसी के बारे में यूजुअली इस्लाम में बताया गया है इन कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन द कोर्ट ऑफ सुप्रीम, ओके, सुप्रीमेसी। सो उन्हीं के बारे में यूजुअली इसमें चर्चित किया गया है। सो लेट मी गो टू द लास्ट नंबर पॉइंट, वी कैन इवन डिस्कस अबाउट दिस। सो यूजुअली इसमें क्या दिया गया है, सो व्हाट द लॉ मस्ट हैव, what the law must have, तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव इंडीड सीन द बैक ऑफ सेशन 124 यू मस्ट सी इट इज़ द सक्सेस फॉर फ्रीडम। तो सक्सेस फॉर फ्रीडम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बट दिस इज रिजल्ट विद द मीनिंगलेस इफ आवर government are allowed to replicate their use of sedition through the invocation of other status on equal baseless ground various preservative if we discuss about CAA Act, तो अगर इस एक्ट के अंतर्गत 120 सेक्शन 124 एक्ट किया गया है या फिर लागू किया गया है, इट बिकम्स ए मैटर ऑफ डिस्कशन, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंट एग्जाम्पल्स, डिफरेंट protest against different laws, but still the government should have to view, say and also give their points of discussion to be implemented in a very peaceful and rightful manner. So this is all about today's video analysis. Thank you.